Good morning, all of you. Today we have discussed about the topic ecosystem and biodiversity. Then first of all introductions. इसके पहले इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने देखे थे. तो ecosystem consists of biotic and abiotic components, that is animals, plants and microorganism as a biotic, and soil, minerals, water and air as a abiotic components. तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक जिसको बोला जाता है एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब अजैविक घटक, दैट इज द soil, minerals, water and air as abiotic components. इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोला जाता है. इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in conjunction with the non-living components of the environment. These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycle and energy flow. Ecosystems are controlled by external and internal factors. External factors, that is the lights. Then biodiversity is the variety of living species on the earth. Plants, animals and microorganisms and the ecosystem form. Biodiversity मतलब जैव विविधता. Then definition of ecosystem, definition of ecosystems, definition of ecosystem. The biotic components and abiotic components together form, it is called as the ecosystems. Definition: an ecosystem is that it is a community of group of living organisms that live in and interact with each others with specific environment. It can be of any size. Sun is a primary or major source to provide energy, which then through any ecosystem. During flow of energy, all components get role to play as a primary, secondary, tertiary producers or consumers. Then ecosystems consist of biotic and abiotic components, that is animals, plants and microorganisms as the biotic components, and soil, mineral, water and air as the abiotic components. All of these together form an ecosystems. मतलब biotic components and abiotic components together form an ecosystems. An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of the environments. The nutrient cycle and energy flow play an important role to link biotic and abiotic components together. Then characteristics of ecosystems. तो ecosystem can be of any size, मतलब परिस्थिति तंत्र और परिस्थिति की शास्त्र जिसको बोला जाता है, उसका जो साइज कैसा रहता है, कैन बी ऑफ एनी साइज, कौन से भी साइज में रह सकता है. देन सन इज अ प्राइमरी और मेजर सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी विच देन फ्लो थ्रू एनी इकोसिस्टम्स. मतलब सनलाइट एनर्जी इज अ प्राइमरी और मेजर सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी.
During flow of energy, all components get role to play as primary, secondary, tertiary producers or consumers. सेकंड एक डेफिनेशन है इकोसिस्टम की कि ecologist Arthurs Tonsley has defined ecosystem the whole system including not only the organism complex but also the whole complex of physical factors forming what we call the environment. Then aspects of ecosystems. Aspects of ecosystems. First, we discussed structural aspects, then functional aspects. Components that make up the structural aspects of an ecosystem include inorganic aspects, carbon, nitrogen, carbon dioxide and waters. तो एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब परिस्थिति तंत्र के पहलू क्या है उसमें. तो इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स में क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिंक अबायोटिक टू बायोटिक एस्पेक्ट्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड टोपोग्राफी. उत्पादक प्रोड्यूसर्स प्लांट्स. माइक्रो कंज्यूमर्स फोटोट्रॉप्स, लार्ज एनिमल्स. माइक्रो कंज्यूमर कौन कौन से, फोटोट्रॉप्स, लार्ज एनिमल्स. माइक्रो कंज्यूमर्स सैप्रोट्रॉप्स absorb fungi. In an ecosystem, living organisms means biotic components continually interact with each other and with the environment. Ecosystem include living organisms, the dead organic matters produced by them, the abiotic environment within which the organism live and exchange elements, that is the soil, water, atmosphere and the interactions between these components. Then components that make up the functional aspects of an ecosystem include energy cycle, food chain, diversity, interlinkage between organisms. Next, nutrient cycle, biochemical cycles and the last evolutions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम में अपन देख रहे हैं एनर्जी साइकिल. द एनर्जी साइकिल इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम्स. एनर्जी जो फ्लो होती है वो कहाँ से होती है, एनर्जी फ्लो सनलाइट इज कन्वर्टेड बाय प्लांट्स देमसेल्फ इनटू ग्रोइंग न्यू प्लांट मटेरियल्स which includes leaves, flowers, fruit, branches, trunks and roots of plants. During photosynthesis, carbon dioxide is taken by plants and oxygen is released. जिस समय फोटोसिंथेसिस होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप, क्या करता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन. देन एनिमल्स डिपेंड्स ऑन दिस ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशंस. नेक्स्ट है फूड चेन. प्लांट्स कैन ग्रो बाय कन्वर्टिंग द सन एनर्जी डायरेक्टली इनटू देयर टिश्यूज. दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में जो भी प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं, सन एनर्जी डायरेक्टली इनटू देयर टिश्यू. वो काय में कन्वर्ट होता है, प्लांट्स क्या करता है, सन एनर्जी उसको कन्वर्ट करके काय में लाता है, टिश्यू में लाता है. द प्लांट्स आर यूज्ड बाय हर्बीवोरस एनिमल्स एंड फूड विच गिव्स देम एनर्जी.
The carnivorous its turn depend on herbivorous animals on which they feed. Then such different plants and animal species are linked to one another through food chains. Each food chain has 3 or 4 links. Then next है diversity aspect of ecosystem में next topic है diversity interlinkages between organisms. The different plants and animal species are linked to one another through food chains. Each food chain has 3 or 4 links, however, as each plants or animals can be linked to several. Then ecological successions means evolutions. Last है evolutions. So ecological succession is a process through which ecosystem tend to change over a period of time. If a forest is cleared, it is initially colonized by a certain group of species of plants and animals which gradually change through an orderly process to community development. Evolutions of man from monkeys is the result of ecological succession. इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? मैन का मंकी से. One can predict that an open area will gradually be converted into grasslands, a shrub, and finally a woodland and a forest. Then next topic, division of ecosystem, we will discuss tomorrow.